Good evening, everybody. Hope you are able to listen to me well. Yes. So, hope you are getting well. My voice. Is everyone getting my voice well? Yes, sir. Yes. Good evening once again. And let's move. We were discussing thermodynamics, and this is, I think, so it's fourth chapter, fourth lecture for thermodynamics. And in last lecture, we have discussed many concepts related with thermodynamics. So uh, now we have to go ahead with this. Last lecture, what we have discussed in thermodynamics is that what is the concept of first law of thermodynamics. We have discussed first law of thermodynamics and related concepts. So we have seen different statements of first law of thermodynamics, interpretations as well as mathematics. And also we have seen modification of first law of thermodynamics because of Einstein, because of Einstein. And also we have seen first law of thermodynamics didn't give the change, the direction of change. So that's why we have to proceed. We have to go ahead. Second law of thermodynamics, and that is what we have gone with this. So we have gone with that part. Okay. So now the thing is that when we have done with first law of thermodynamics and second law of thermodynamics, then we have to proceed to the next and most important concept of chemistry or thermodynamics is enthalpy. Before proceeding to enthalpy, again we have to revise some of the important topics or important points in order to get enthalpy well. So amongst that, the number one concept what we have to revise is nothing but first law of thermodynamics. So we know that energy can neither be created nor be destroyed. Only one form of energy can be converted. This is what we have seen. Yeah, we also discussed earlier. Got it? Or at the same time, we have one for the next. That is second law of thermodynamics. Which says that flow of heat is always unidirectional from hot end to cold end. That is also what we have seen. Okay, here we have discussed earlier. Now, while moving ahead, we have seen one of the important concepts which is needed to study enthalpy. It's called as internal energy. We have seen the concept of heat, and also we have seen the concept of internal energy. So in this, in the concept of internal energy, we have seen the absolute amount of energy associated with the substance is called as internal energy. Yeah, we have seen that sum total of different types of energies present in the substance is also known as its internal energy. So that is what we have seen. So इंटरनल एनर्जी हमारा क्लियर हो जाता है और हीट भी क्लियर हो जाता है उसके आधार पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट के दैट्स कॉल्ड एंथैल्पी कांसेप्ट ठीक है सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कांसेप्ट सो एंथैल्पी okay and this is noted by H. Enthalpy is noted by capital H, and this is most important concept here in thermodynamics because it is simple. और खास करके अभी तक का जितना पार्ट हमने थर्मोडायनामिक्स के अंदर देखा है दैट इज ऑलमोस्ट कॉमन इन फिजिक्स एंड इन केमिस्ट्री बट ये एंथैल्पी से हम लोग सही मायने में एंटर करते हैं केमिस्ट्री की तरफ बिकॉज़ हम लोग मेनली केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इस टॉपिक के साथ हम लोग केमिस्ट्री में सही मायने में एंटर करते हैं दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट इन दैट सो व्हाट इज एंथैल्पी एंथैल्पी क्या है भले ये वर्ड आपके लिए नया है लेकिन कांसेप्ट बहुत सिंपल और बहुत इजी ठीक है सो एंथैल्पी इज total heat content of the system. Simply, enthalpy is a total heat content of the system, total energy content of the system, including its internal energy and pressure, volume type of energy is called enthalpy. So simple. Enthalpy is a total energy content of the system, or you can say total heat content of the system, including its internal energy and pressure, volume type of energy. So that is what we discussed here. Enthalpy. तो जिस तरीके से हमने डेफिनेशन डिस्कस किया कि एंथैल्पी इज टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी सो एज पर द डेफिनेशन मैथमेटिकली हम लोग ऐसा फॉर्म लिख सकते हैं इसका दैट इज H इज इक्वल टू U प्लस V ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं दिस इज द फॉर्मेट व्हाट वी गेट हियर क्योंकि हमने डेफिनेशन डिफाइन किया एंथैल्पी इज the total energy content of the system, including its internal energy and pressure volume type of energy.
दैट इज द वर्क कंसेप्ट। तो ये दोनों का जो सम टोटल होता है दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी। अब देखिए internal energy is the absolute amount of energy associated with the substance. जो हम इस U की बात करते हैं, this is sum total of different types of energies present in the substance. Substance के अंदर present होने वाले different types of energy का जो sum total है, उसे हम लोग सिर्फ substance के अंदर का, matter के अंदर का, system के अंदर का, उसे कहते हैं हम लोग इसका internal। लेकिन बाहरी जो कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे प्रेशर वॉल्यूम की बात आती है, उसका भी एक एनर्जी उसके अंदर ऐड होता है। तो वो अगर उसके इंटरनल एनर्जी के साथ ऐड करते हैं तो दैट बिकम्स योर एंथैल्पी। That becomes our enthalpy. So enthalpy is total energy content of the system, total heat content of the system, including its internal energy and pressure volume of energy is becomes your enthalpy. So it's so simple. Definition हो गया है, mathematical form भी हो गया, लेकिन इसके साथ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम, इसके साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है कि this is the enthalpy which depends upon internal energy and pressure volume of energy. अभी enthalpy depends upon internal energy, क्यों? और हमें इंटरनल एनर्जी के अंदर एक कॉन्सेप्ट देखा था कि इंटरनल एनर्जी हम लोग मेजर कर नहीं सकते, बिकॉज़ इंटरनल एनर्जी इज नॉट अ सिग्निफिकेंट टर्म। किसी भी मैटर का, किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी हम लोग मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज़ वी आर सेइंग दैट दो इट्स अ इनिशियल स्टेट, देयर इज अ फाइनल स्टेट, हम किसी भी स्टेट का एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज़ कुछ फॉर्म्स हमें आज पता है, दीस आर नोन टू अस, और सम फॉर्म्स आर नॉट नोन, आज भी अननोन, वी हैव टू फाइंड। तो इन दैट सेंस किसी भी मैटर का, किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी मेजर करना आज की तारीख में हमारे कंट्रोल में ना है। सो अगर हम इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं कर सकते तो हम भी आर गोइंग टू मेजर नहीं करते, ये भी बात है। तो जिस तरीके से वी आर नॉट एबल टू मेजर द इंटरनल एनर्जी, वी हैव टेकन इंटरनल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। भले हम लोग यू मेजर नहीं कर सकते, हम U1 मेजर नहीं कर सकते, U2 मेजर नहीं कर सकते, बट डेल्टा यू मेजर कर सकते हैं। देखा हमने डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट is nothing but the delta U. So U2 minus U1 is delta U. तो अगर हम लोग डेल्टा U मेजर कर सकते हैं तो एंथैल्पी भी हमें डेल्टा H के फॉर्मेट में मेजर करना है, बिकॉज एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं कर सकते तो एब्सोल्यूट एंथैल्पी मेजर। सो इन दैट सेंस though the theoretical form is here, H is equal to U plus PV, we can't measure U, so that's why we can't measure H for U. So hence we need to explore it a different way, and we have to go ahead format. So that's why this तरीके से U डेल्टा U में मेजर कर सकते हैं, उस तरीके से H भी हम लोग डेल्टा H के फॉर्मेट में यूज करते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग ग्राफिकल सिस्टम में सपोज कर सकते हैं, ग्राफिकल सिस्टम दिस इज द स्टेट A जिसका इंटरनल एनर्जी U1 और दिस इज स्टेट B जिसका U2। तो उसी तरीके से अगर हम उसे एंथैल्पी का कांसेप्ट लागू कर सकते हैं तो यहाँ पे एंथैल्पी विल बिकम H1 एंड हियर एंथैल्पी विल बिकम H2, H2 एंथैल्पी आएगा। सो इस तरीके से हमारे एंथैल्पी आ जाएगा। तो इस सेंस में तो दोनों का डिफरेंस होगा डेल्टा H। सो वी कैन राइट एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट, एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट, इनिशियल मतलब फर्स्ट स्टेट, दैट शुड बी H1। एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट मस्ट बी H1, H1 is equal to U1 plus P1 V1। so this is equation number 1 what we get here, equation number 1। उसी तरीके से एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट, this is initial state, this is final state, enthalpy of final state should be H2 is equal to U2 plus P2 V2, this is 2 हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग डेल्टा H is equal to H2 minus H1 ले सकते हैं, this is the enthalpy of initial state, this is the enthalpy of final state। जिस तरीके से हम लोग H2 minus H1 ले सकते हैं, that is the difference of enthalpy between the two states। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, so the difference of enthalpy between the two states is therefore we can write H2 minus H1 is equal to, इनका भी होगा उसी तरीके से, that is you can say U2 minus U1 bracket plus इधर होगा P2 minus P1 this one, इस तरीके से लिख सकते हैं। Equation number 2 minus equation number 1, because this is the enthalpy of final state, this is the enthalpy of initial state। हम जानते हैं thermodynamics consider initial state and final state, thermodynamics never consider path। So difference is equal to इस तरीके से, so we can write here that is delta H is equal, this will be your delta U। Here we have to write that delta P और delta V नहीं लिख सकते हम, the reason behind it हम ऐसे कर सकते हैं। so मैं अभी फिलहाल ऐसे P2 V2 minus P1 V1। so हमने स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन देखे थे, दैट इज प्रोसेस के डेफिनेशन देखे थे, उसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस।
और जिसके अंदर मैंने बताया था कि what is this isoporic process in which volume remains constant. What is isobaric process in which pressure remains constant. So pressure remains constant. तो pressure का P is equal to P1 is equal to P2. प्रेशर का हमने डेल्टा P नहीं लिखा था बिकॉज हम जितने सारे रिएक्शंस करते हैं, जितने सारे प्रोसेस करते हैं, हम उसी कंडीशंस पे करते हैं, यानी कि गिवन कंडीशन पे करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करते हैं, जिसके अंदर हम बदलाव नहीं लाते, and that's why डेल्टा P के फॉर्मेट में नहीं लिखते, तो प्रेशर वैल्यू विल बी गिवन सेट इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रेशर, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, P must be equal to P1 must be equal to P, P1 must be equal to P2 must be equal to P. So instead of P1, P2, we can use P here. P यहाँ पे P use करेंगे, यहाँ पे P use करेंगे, कि pressure is not going to change, atmospheric pressure is not going to change. तो वो अगर यहाँ पे put कर दें, that will be taken as common. So delta H is equal to delta U plus P can be taken as common and bracket में B minus B1 delta P. This is the mathematical definition for changing enthalpy. So this is what we have done. So enthalpy की इसमें दो चीजें आती हैं. Number one, that is definition of enthalpy. And number two, that is what we can say mathematical derivation of enthalpy. We have this. So what is the mathematical derivation? Delta H is equal to delta U plus P delta V. We can't calculate absolute enthalpy because enthalpy depends upon internal और internal energy absolute find out नहीं कर सकते. So इसीलिए हम लोग enthalpy भी find out नहीं कर सकते. So that's why we are taking it in the format of change in enthalpy. So delta H stands for change in enthalpy. Delta U stands for change in internal energy. P stands for pressure, and delta V stands for change in volume. So this is what we can see. With this, so we have no case of build up. So once again, what is the definition of enthalpy? Enthalpy is the total energy content of the system, including its internal energy and pressure volume type of energy. So this is the statement, and based on the statement, we have the mathematical form. H is equal to U plus P2. ये मैथमेटिकल फॉर्म है और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं कर सकते, इसलिए चेंज इन इंटरनल, सो इंटरनल चेंज इन इंटरनल. सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट, H1 is equal to U1 plus P1 given, and this is the एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट, H2 is equal to U2 plus P2 V2. ये हम लोग को इसके अंदर मिलता है. So this is what we have got it, हम लोग इसके अंदर मिलता है, and taking different sign for this delta is equal to U plus P delta V because this process is carried out at constant pressure. So pressure never changes, so we put the value P is equal to P1 is equal to P2, and we got this. So this is the equation for change in enthalpy of the process of the system. Delta is equal to U plus P delta V. Have this. Now again we are discussing here what is the relation between enthalpy, that is also called as heat of reaction. यही enthalpy को हम जब केमिस्ट्री में लागू करते हैं उसे heat of reaction. जैसे मैंने कहा किसी भी रिएक्शन के अंदर हीट ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है. यहाँ तक का पार्ट सिस्टम के लिए अप्लाई होता है, बट केमिस्ट्री के अंदर सिस्टम माने केमिकल रिएक्शन होता है. तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि सपोज C+O2 प्रोड्यूसेस CO2 और इसके अंदर जो डेल्टा H है दिस इज -395 किलोजूल लिखा है, -395 किलोजूल लिखा है. तो अभी देखिए एक एग्जांपल दिया हमने, carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide and how much energy is released here in this process. Delta H is negative. Delta H is negative मतलब enthalpy is released by the system. ये साइन कन्वेंशन है. delta H अगर नेगेटिव होता है तो एनर्जी इज रिलीज बाय द सिस्टम, हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम, और डेल्टा H अगर पॉजिटिव होता है तो हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, मतलब एंथैल्पी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में whenever carbon dioxide is formed at that time -395 kilojoule energy is released, 395 kilojoule energy is released. अब देखिए रिएक्शन पढ़ने का तरीका है कि whenever carbon reacts with 1 mole of oxygen, it produces 1 mole of carbon dioxide. At that time 395 kilojoule heat is released, being this is the exothermic reaction. Now this is also called as heat of reaction. मैंने कहा एंथैल्पी को हम लोग केमिस्ट्री में हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं. सो एंथैल्पी इज आल्सो कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन इन केमिस्ट्री नॉर्मली. सो अगर हम जानते हैं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का पैरा होता है तो 395 किलोजूल की रिलीज होती है. अगर उसके ज्यादा मोल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं तो क्या ये हीट ऑफ रिएक्शन सेम रहा है या डिफरेंट है? दैट इज द क्वेश्चन. तो 100% सिंपल बात है कि इफ नंबर ऑफ मोल्स आर डिफरेंट देन the heat release here in this process will be different. So that heat reaction that may be exothermic or that may be endothermic depends upon number of moles of reactant involved in chemical reaction.
इस सिस्टम के अंदर हीट ऑफ रिएक्शन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो देयर इज नो सच टर्मिनोलॉजी वेयर अ नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व, यहाँ पे कोई नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये केमिस्ट्री को सिस्टम और ये इक्वेशन लागू नहीं कर पाए। सिस्टम जहाँ तक पार्ट है, सिलेंडर की जहाँ तक पार्ट है, वो हम लोग लागू कर सकते हैं, बट केमिकल केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग लागू नहीं कर सकते, और इसीलिए हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से करते हैं? वी हैव द इक्वेशन, इक्वेशन ऑलरेडी जानते हो, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, इक्वेशन दिस इज इक्वेशन, ये हम लोगों को मिल गया। अब देखिए, we have the equation that is ideal gas equation. We have ideal gas equation. क्या ideal gas equation हमारा? That is PV is equal to nRT. This is the equation for one. This is equation for two. So we know ideal gas equation PV is equal to nRT. P stands for pressure, V for volume, N for number of moles, R for gas constant, T for temperature. So this is what we can say. ये हमारे पास होता है, that is ideal gas. अभी जैसा हम जानते हैं थर्मोडायनामिक कंसीडर इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, नेवर कंसीडर पाथ। सो अगर हम जानते हैं इसके अंदर भी करना चाहते हैं तो इनिशियल स्टेट के अंदर व्हाट वुड बी दिस आइडियल गैस इक्वेशन? इट वुड बी अगेन P1 V1 is equal to N1 RT, N1 R, ये N1 RT ही रहेगा, N1 R1 T1 नहीं रहेगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है और ये तो गैस कांस्टेंट, which is going to be remain a constant forever. So that's why P1 V1 is equal to N1 RT. This is the equation for one initial. Then it's for final state. The equation becomes P2 V2 is equal to N2 RT. ये equation बनता है. So जिस तरीके से हम डिफरेंस लेते हैं फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट का, तो therefore we consider P2 V2 minus P1 V1 is equal to N2 minus N1 कॉमन निकालते हैं हम लोग RT हमारा कॉमन, सीधा स्टेप जंप करते हैं, चलेगा। सो वी गॉट दिस। तो अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वापस वही होगा, हमारा जो प्रेशर है वो आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, तो P कैन बी टेकन एज कॉमन, सो दैट्स व्हाई P इज इक्वल टू P2 माइनस P1 डेल्टा V, डेल्टा V मिल जाता है इज इक्वल टू इधर होगा डेल्टा N और यहाँ पे होगा R, डेल्टा N R और T कांस्टेंट क्यों है? मैंने बताया कि R ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है, दैट रिमेंस कांस्टेंट, or T is an isothermal process, over the temperature also remains constant. Temperature is also not going to change. And isobaric process, what is going to change? Volume is going to change and number of moles are going to change. So what we get here, P delta V is equal to delta N RT equation. Do you know? So P delta V is here. अगर हम पहले equation की बात करें तो इसमें P delta. So instead of P delta V, we can put the value delta N RT. So putting this value, so this will be equation for P. Putting this equation P equation 1. What we get finally, delta H is equal to delta U plus delta N T. This is the second equation of the enthalpy. You can say modification of enthalpy, which is useful to apply into the chemistry. The reason that chemistry के अंदर we are dealing with the chemical reactions, and in chemical reaction, heat of reaction that may be exothermic or that may be endothermic, which depends upon number of moles. And this is the equation in which there is a time or a change in number of moles. So this equation is directly, or this equation can be directly applied to the chemical reaction in order to calculate the heat of reaction. So this is also enthalpy. तो केमिस्ट्री में आपसे enthalpy को या heat of reaction कहो, it's come to the similar one. इस तरीके से ये भी equation है, ये भी equation. When it is a system, we use this equation. Or whenever values are provided in the terms of pressure and volume, we use this equation. Or whenever values are provided in the form of change in number of moles, R and T, we use this equation. So to calculate the enthalpy or heat of reaction. So delta H equal to delta U plus delta nRT. जानते हैं delta H stands for change in enthalpy or heat of reaction. This stands for change in internal energy. This stands for change in number of moles. Delta N और delta N का value क्या है? N2 minus N. N1 क्या है? Number of moles of initial state. N2 क्या है? Number of moles of final state. So delta N is a change in number of moles. R is a gas constant, and T is a temperature, and T is a temperature. That's what we get. So अभी देखिए रिएक्शन की जब बात करते हैं तो रिएक्शन के अंदर ये जो डेल्टा एन की बात करें N2 minus N, N1 किसे कहेंगे, N2 किसे कहेंगे? किसी भी रिएक्शन में नॉर्मली रिएक्टेंट हमारा पहला स्टेट होता है, इनिशियल स्टेट होता है, और प्रोडक्ट हमारा फाइनल स्टेट होता है, सेकंड स्टेट होता है। तो इन दैट सेंस वी कैन से
किसी भी रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज इनिशियल स्टेट, दैट इज N1, and number of moles of product, this is always a final state, that is you can say M2. So number of moles of product N2, number of moles of reactant N1. So ये इक्वेशन जब आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, तो कीप इट इन माइंड दैट N2 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड N1 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट इज ऑलवेज इनिशियल स्टेट and product of which is a final state. So that's what we get according. You have with us? One more thing, keep it in mind for this. मैंने ये बताया कि while we are going to put the values and calculate the heat of reaction at that time, we have to put N1 and N. But किसी भी रिएक्शन के अंदर N1 N2 किसका हम कंसीडर करें? जैसे मैंने बताया कि सॉलिड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं या गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, तो उसके अंदर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स निग्लिजिबल होता है, मतलब होता ही नहीं, ऑलमोस्ट इस टाइप का होता है। लेकिन अगर गैसियस रिएक्टेंट हमारे तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल इज वेरी सिग्निफिकेंट, वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और इसीलिए किसी भी रिएक्शन में अगर हम लोग N1 N2 वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो अगर हमारे रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है, तभी हम लोग N2 N1 उसका यूज करेंगे। जितने सारे सब्सटेंसेस हमारे गैसियस स्टेट में है, उन्हीं का नंबर ऑफ मोल्स यूज करेंगे N1। हम जो हमारे गैसियस स्टेट में नहीं, सॉलिड लिक्विड फेज में, उनका नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, ये इक्वेशन ऑलरेडी है। अगर थर्मोडायनामिक्स तरीके से इक्वेशन लिखने जाते हैं, तो यहाँ पे आता है कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन के बारे में आता है O2 गैसियस, और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आता है वापस ऐसा आता है। तो अभी देखिए इस रिएक्शन में these are reactant, so that should represent N1 and this is the product should represent the N2। और इस रिएक्शन का मुझे अगर डेल्टा N निकालना है, तो डेल्टा N का वैल्यू क्या है? डेल्टा N is equal to N2 minus N, N2 minus N। अभी इस रिएक्शन में यहाँ पे रिएक्टेंट की बात करते हैं, तो ये दो है, दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन। बट कार्बन जो है सॉलिड फेज में, कार्बन सॉलिड फेज में, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, जो आगे का प्रीफिक्स होता है दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स। तो ये नंबर ऑफ मोल 1 है, लेकिन सॉलिड फेज में, तो वो कंसीडर नहीं करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू। सो सिर्फ इसका कंसीडर करिए एज 1। तो N1 का वैल्यू कितना होगा आपका 1, तो यू कैन से N1 is equal to 1। और यहाँ पे बात करते हैं, दिस इज योर प्रोडक्ट N2, N2 का वैल्यू आगे कितना है 1, और गैसियस स्टेट में तो कंसीडर करना, ये भी गैसियस स्टेट में, तो इसका गैसियस स्टेट में आएगा 1, N2 is equal to 1, तो दिस विल बी N2 minus N1, तो कितना आएगा 1 minus 2 is equal to 0, डेल्टा N is equal to 0। तो इस रिएक्शन में डेल्टा N will be equal to 0 ऐसा, ठीक है। दूसरा भी एग्जांपल देता हूँ, ये थोड़ा एनालाइज करता हूँ। दूसरा भी एग्जांपल देता हूँ, इसके अंदर डेल्टा N 0 नहीं रहेगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन दिस। जैसे कि N2 plus twice H2 produces twice NH3 ऐसा बन गया। इसके अंदर नाइट्रोजन इज इन गैसियस फेज, नाइट्रोजन इज इन गैसियस फेज, और अमोनिया इज आल्सो इन गैसियस, इस टाइप का रिएक्शन। अब देखिए इसके अंदर नाइट्रोजन इज गैसियस फेज, हाइड्रोजन आल्सो इज इन गैसियस फेज, दिस आल्सो ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फेज, उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो डेल्टा N is equal to N2 minus N। अभी N2 इज अ प्रोडक्ट T है, सो प्रोडक्ट गैसियस है, इसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 2 दिए, जो प्रीफिक्स है वो हमारा नंबर ऑफ मोल्स है 2, तो आई विल पुट हियर 2, यहाँ पे वैल्यू आएगा 2 माइनस। इसकी बात करते हैं, ये 2 है, इससे दोनों लेने पड़ेंगे, है ना, 2 रिएक्टेंट, दोनों की नाइट्रोजन गैसियस फेज में इसके आगे 1 है, 1 प्लस हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 है, गैसियस फेज में 3 है, 3 है, तो इसमें 2 माइनस ये 4, ये क्या आएगा -2 है। सो दिस इज डेल्टा, क्या होगा डेल्टा का वैल्यू आएगा -2। So whatever is that, either it is minus, either it is plus, but we have to write the change in number of moles because initial state में number of moles ज़्यादा है, final state में number of moles कम हो जाता है, so that happens। So ऐसे इसी तरीके से निकाला जाता है। तो ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, मैक्सिमम बच्चे यही पे गलती करते हैं, मैक्सिमम बच्चे यही पे गलती करते हैं while calculating delta n, that's why they are not able to find out the values of n, क्योंकि रिएक्शन में केयरफुली देखना पड़ेगा आपको कि इधर रिएक्टेंट्स आर गिवन इन लिक्विड फेज, सॉलिड फेज और गैसियस फेज, और जो लिक्विड और सॉलिड फेज में उनके नंबर ऑफ मोल कंसीडर नहीं करने हैं, और जो गैसियस स्टेट में उनके करने हैं। और क्यों नहीं करने उसका रीजन बताया मैंने, बिकॉज लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन वॉल्यूम, बट इन केस ऑफ गैसियस स्टेट देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज, एंड दैट्स व्हाई दैट इज कंसीडर्ड। सो दैट इज व्हाट वी आर विद दिस। सो दिस व्हाट वी आर सीइंग। तो डेल्टा H एंथैल्पी के दो फार्मूला मिल गए, पहला फार्मूला मिल गया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और दूसरा फार्मूला मिल गया हम लोगों को डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। सो दैट इज व्हाट वी गेट हियर। ये हम लोगों को उसके बाद क्वेश्चन
Now we have to find out the values of the heat of reaction. दो तरीके से heat of reaction, that is also called as enthalpy, at a constant pressure and at constant volume. दोनों टाइम पे हमें निकालना है कि what is the heat of reaction. So अभी देखिए यहाँ से अगर मैं heat of reaction वर्ड यूज भी करता हूँ, that is change in enthalpy. अगर मैं enthalpy वर्ड यूज कर रहा हूँ तो that is heat of reaction. ध्यान रखिएगा clear. So we have the equation, मतलब we have to discuss enthalpy. We have to discuss enthalpy at constant pressure, and we have to discuss it at constant volume to discuss that. So enthalpy at constant pressure and at constant volume. We have this equation. हमारे पास equation है, common equation है. This is delta H is equal to delta U plus P delta V. ठीक है. अब ये common है, तो ये common है. But at a constant pressure, this equation itself is derived at constant pressure. So this will remain as it is. That is delta H is equal to delta U plus P delta V. ऐसा है. So this is itself at constant pressure. So I will write here at constant pressure. मैं constant pressure लिखूंगा क्योंकि this is the heat of reaction at constant pressure, which is similar because ये equation भी हमने constant pressure पे ही derive किया. So that's why it remains similar. यहाँ पे अगर आते हैं तो constant volume constant है तो delta V becomes 0. Delta V 0 होता है. Isoporic process तो 0 होता है. So in that sense, ये factor 0 बनना है. Delta H is equal to only delta U because this factor will become 0. ये factor 0 है. तो yeah. तो अभी ये लिखना है तो यहाँ पे P लिखना because this is the heat of reaction at constant volume. So this is the heat of reaction at constant pressure. This is the heat of reaction at constant volume. Now, which has the larger value? Which has the smaller value? We have to compare. Which is larger and smaller? Either this is larger or this is larger. क्या करें? यहाँ पे तो plus P delta, isn't it? So in that sense, you can say कि ये जो heat of reaction at constant volume, इसके अंदर P delta भी जब हम add करें, तब जाके it is going to be a parameter. So we can find out the value which is larger and which is smaller, depending upon that. And what about this factor? P delta V कितना है उस factor उसके ऊपर depend करेगा. Either heat of reaction at constant pressure is greater or either heat of reaction at constant volume is greater. So that's we can clear. तो ये आ जाता है तो we can calculate the heat of reaction. That means the enthalpy change in enthalpy at constant volume and at constant pressure. ये दोनों हम लोग उसके हिसाब से निकाल सकते हैं. So these are what we can say. And also we can calculate the heat of reaction at different process. मतलब heat of reaction जैसे कि isoporic process में, isobaric process में, isothermal process में, adiabatic process में, इस अलग-अलग process में हम लोग निकाल सकते हैं. अब ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं. देखिए कि हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ मतलब थर्मोडायनामिक्स के अंदर की और एक जो खासियत है ना कि क्यों बच्चों को थोड़ा ये ट्रिकी लगता है सब्जेक्ट या ये चैप्टर. रीजन के अंदर इसके अंदर जितने सारे डेरिवेशन देखते हैं वो सारे डेरिवेशंस के कई सारे मॉडिफिकेशंस आते हैं. और वो मॉडिफिकेशन एग्जैक्टली क्या आते हैं आप देखिएगा. तो जैसे मैं बताया कि ये हमारा दिस इज इक्वेशन ऑफ और चेंज इन एंथैल्पी. उसी तरीके से अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट इज Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. ये बता. This is equation number 1. This is equation number 2. This is change in enthalpy and this is first law. अभी दोनों का देखिए RHS देखिए. This is RHS right hand side. This is RHS. दोनों का RHS सिमिलर है. अगर दोनों का RHS सिमिलर है तो LHS has to be similar. So in that sense you can say delta H is equal to Q. Delta H is equal to Q. This is also become. तो ये मॉडिफिकेशन होता है. हम कौन सा कंडीशन कंसीडर करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट द मॉडिफिकेशंस आर देयर एग्जैक्टली in this equation उसके ऊपर डिपेंड करता है. So accordingly हम फाइंड आउट कर सकते हैं. At the same time we can find out either change in enthalpy, either you can say heat at different processes. मतलब अगर हम लोग निकाल सकते हैं आइसोपोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस तरह जानते हैं. मतलब दिस पुट द कि डेल्टा V 0, दिस फैक्टर बिकम 0, Q मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा U. इधर भी होगा 0, तो डेल्टा U डेल्टा U. Isobaric process, this equation itself is proved at isobaric process. This equation is also proved at isobaric process. So there is no change at all in that case. In case of isothermal process, so when we have isothermal process, when delta U becomes 0, change in internal energy is 0 because temperature is not allowed to change. So whatever the work is obtained, that is obtained out of internal energy, and that's why change in internal energy will be 0.
और इंटरनल जाएगा जीरो होता है, चेंज इन इंटरनल जाएगा जीरो होता है, इसका जीरो आएगा, सो Q becomes equal to P delta V which is equal to W, that is minus W. यहाँ पर भी चेंज इन इंटरनल जीरो आएगा, डेल्टा H becomes equal to P delta V. These are the simple changes. ये बहुत simple changes है, but we have to understand what is isophoric process, what is isothermal process, what is isobaric process, what is adiabatic process. हमने adiabatic process का भी definition देखा. It is the process in which heat is neither absorbed nor released. Means Q is equal to zero. तो adiabatic process में Q is equal to zero. Q is equal to zero. Delta is equal to minus P delta V. We have that equation. So these are just modifications which occurs here in enthalpy. So that is what we have here. So that's all for the enthalpy. Enthalpy के अंदर इतनी चीजें आ जाती हैं. एक बार वापस देखते हैं कि what are the content, what is the content of enthalpy. Number one, there is a definition of enthalpy. Number two, there is a mathematical derivation of this enthalpy. Number three, that enthalpy is being converted to or applied to the chemical reactions, and that's why delta energy factor is used by using ideal gas. And enthalpy is what is the heat of reaction in case of chemistry. To calculate the heat of reactions, the number of reactions, and that's why number of moles are important when we discuss the chemical reactions and all. And that's why number of moles matters. So heat of reaction can be calculated at constant pressure, can be calculated at constant volume. And heat of reaction at different processes, isophoric, isobaric, isothermal, or adiabatic process can be calculated. That is the enthalpy. This is the thing. These are the things which are involved with the enthalpy. Thus, अभी इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी मैटर करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, उसके हिसाब से डेल्टा एच के साइंस का मेंशन हो रहा है. लेकिन डेल्टा एच के दो मेन साइन हैं. डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम सराउंडिंग. और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम, तो हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम. दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. So there is exothermic reaction, there is a endothermic reaction that too again happens in this one. You have this? So that is what we can say enthalpy. अभी मैंने कई बार बताया आपको कि this enthalpy is a core concept of thermodynamics. खास करके when we are applying this thermodynamics to the chemistry, chemical reactions at that time, this enthalpy is most important. अब देखिएगा, there are many types of these enthalpies in chemistry that we are dealing with. Number of physical process, number of chemical process, number of physical transformations, number of atomic and molecular transformations. और ये सब के साथ enthalpy जुड़ा हुआ है. So that's why let's come to the different types of enthalpies in chemistry where we deal. So we have discussed different types of enthalpies. Let's go to different types of enthalpies. Okay. So सबसे पहला जो आएगा, that is enthalpy in physical transformation or physical change. Physical change. Enthalpy in physical. We have to discuss enthalpy in physical. So, whenever there is any type of physical change, it is always accompanied by a change in enthalpy. Okay? Change in enthalpy is involved in that process. Without change in enthalpy, no physical transformation is possible. Let's have a look. सबसे पहले देखते हैं कि there is enthalpy of fusion. Enthalpy of fusion. फ्यूजन मतलब क्या होता है? और इसी तरह अभी देखिए एंथैल्पी जो हम लिखते हैं ना, डेल्टा एच. एंथैल्पी को हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा एच. समझे? अभी एंथैल्पी के कई सारे टाइप्स हैं, तो जितने सारे टाइप्स हैं वो डेल्टा और एच के बीच में आते हैं. तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यहाँ पे लिखेंगे हम FUS. FUS refers to the fusion. So enthalpy of fusion, delta FUS H. So this is enthalpy of fusion. So this is the notation for fusion. Okay. और फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? आपने शायद लेबोरेटरी के अंदर जब एक्सपेरिमेंट किए थे तो अपने सोडियम का फ्यूजन, सोडियम फ्यूजन टेस्ट वगैरह आपने किया, ये चारकोल के अंदर अपने फ्यूजन के टाइप टेस्ट किया. तो फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड टू लिक्विड जो मूव होता है हमारा, सॉलिड टू लिक्विड जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे हम लोग फ्यूजन ऐसे कहते हैं. सो वी हैव टू डिस्कस द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. सो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज दिस. फॉर एग्जांपल देखिए कि यहाँ हियर H2O which is in solid phase, ice that goes to H2O which is in liquid phase. That means water. So ice to water, ये बोलते हैं. So ice is solid phase, water is in liquid phase. So ice to water अगर मूव करना है तो without absorbing heat, it's simply impossible. हम जानते हैं हमारे घर के अंदर फ्रीज है और फ्रीजर के अंदर हमने देखा कि आइस बना के, तो आइस जब तक फ्रीजर के अंदर है, फ्रीजर काम कर रहा है, मतलब हमारा फ्रिज काम कर रहा है, तब तो आइस मेल्ट नहीं होगा. लेकिन मानो हमने फ्रीजर से आइस निकाल के बाहर कर दिया, डाइनिंग टेबल अपने रख दिया, व्हाट विल हैपन? आइस मेल्ट हो जाता है. तो आइस मेल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है एंड दैट विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग.
सराउंडिंग का हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि आइस हमारा सिस्टम है, बाकी हमारा सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का जो हीट है दैट विल बी एब्जॉर्ब बाय द आइस, आइस विल मेल्ट। दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज एब्जॉर्ब, है ना, क्योंकि आइस मेल्ट हो रहा है। सो हियर इट इज ऑब्जॉर्ब बाय प्लस मतलब डेल्टा FUH, डेल्टा FUH जानते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, व्हिच इज प्लस 6.01 किलोजूल, 6.01 किलोजूल। Once again, delta H is in plus. Plus मतलब this is heat is absorbed. Endothermic reaction. So plus 6.01 kilojoule heat is absorbed by the system. Ice 1 mole of ice. यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 mole. So अब 1 mole of ice लेते हैं तब compulsory plus 6.01 kilojoule heat is absorbed by the system. This is called the enthalpy of fusion. अब ये आइस का एग्जांपल दिया, किसी भी सब्सटेंस के बारे में हो सकता है, कोई भी सॉलिड लिक्विड फेज में जा सकता है, और कोई भी सब्सटेंस को अगर लिक्विड फेज में लेके जाना है तो वी हैव टू हीट, है ना। किसी भी सब्सटेंस को मेल्ट करना है तो उसे हीट करना पड़ेगा। हमने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कुछ एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, है ना। सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट हम डिस्क्राइब करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस, उसके अंदर डेफिनेशन मिलेगी। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में फाइंड आउट करना है तो वो सब्सटेंस क्या कैपिलरी ट्यूब में दिया जाता है, उसे मेल्ट किया जाता है ना, हीटिंग का। दैट इज द एंडोथर्मिक। किसी भी सॉलिड को लिक्विड में अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो हीट हैज टू बी सप्लाइड, मतलब दैट सब्सटेंस एब्जॉर्ब द हीट एंड दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये जो हीट है, ये जो एनर्जी जुड़ा हुआ है, दैट इज नथिंग बट द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। कितना लगता है तो 1 मोल ऑफ आइस के लिए हमें कितना लगता है, दैट प्लस 6.01 किलोजूल की तरह है। किलोजूल यूनिट कौन सा है, किलोजूल, जूल किलोजूल। ये सो दिस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब डेफिनेशन कैसे डिफाइन करना है, डेफिनेशन डिफाइन करना है हम लोग, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन ऐसा है, इट इज द change in enthalpy accompany, change in enthalpy accompany complete fusion of, change in enthalpy accompany complete fusion of 1 mole of solid into liquid। एग्जांपल मैंने वाटर का, कई सारे सब्सटेंसेस का एग्जांपल हो सकता है ना, बट डेफिनेशन जनरल सेंस में है। डेफिनेशन क्या होगा, इट इज अ चेंज इन एंथैल्पी accompany a complete fusion of 1 mole of solid into liquid without change in temperature must be known as enthalpy of fusion. That is the enthalpy of fusion. So enthalpy of fusion is change in enthalpy accompanying a complete fusion of 1 mole of solid into liquid. किसी भी सब्सटेंस का 1 mole into the 1 mole of solid into the liquid is a change in enthalpy of that change in enthalpy of or enthalpy of fusion, you can say. Remember this. अब यही उल्टा हो जाता है, सॉलिड टू लिक्विड जाते हैं तो लिक्विड टू सॉलिड पे आते हैं हम लोग। तो ये ऐसा हो सकता है कि दिस इज मतलब सॉरी H2O लिक्विड टू H2O सॉलिड, मतलब वाटर को हम आइस में फ्रीज कर सकते हैं, और वाटर को आइस में फ्रीज करना है तो हम कहते हैं कि वाटर हमें फ्रीजर में लगना पड़ता है, और जब फ्रीजर में लगते हैं तो लिक्विड सॉलिड में चला जाता है। व्हाट विल हैपन, इसका जो एंथैल्पी है वो निकाल लिया जाए, दैट विल बी रिमूव्ड। तो सिस्टम लूजेस हीट, दैट विल बी हीट, ये जस्ट वैल्यू होता है। एंड ये जो प्रोसेस है लिक्विड टू सॉलिड इज अ फ्रीजिंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग प्रोसेस। यहाँ पे डेल्टा F एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग इज इक्वल टू -6.01। जितना हीट मेल्ट होते समय ऑब्जर्व किया था उतना ही फ्रीज होते समय वापस रिलीज करना पड़ेगा, अदरवाइज इट वोंट फ्रीज, इट वोंट फ्रीज। सो इन ऑर्डर टू फ्रीज 1 मोल ऑफ वाटर दैट मस्ट लूज 6.01 किलोजूल ऑफ हीट, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। दिस प्रोसेस इज फ्रीजिंग। तो ये प्रोसेस था फ्यूजन का, ये है फ्रीजिंग, अपोजिट होता है। अभी वाटर का एग्जांपल था तो वो दोनों आपने देख लिया उसी से। इन दैट सेंस यू कैन सी एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग का डेफिनेशन डिफाइन किया जा सकता है, it is the change in enthalpy accompanying a complete freezing of 1 mole of liquid into solid without changing temperature. It's called an enthalpy of freezing. So we have enthalpy of fusion, we have enthalpy of freezing. So these are the two things what we get here. Remember this. Now, or second example is enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization. Take delta H. Vap for vaporization. Enthalpy of vaporization. So vaporization मतलब हम simply जानते हैं water that is in liquid phase has to take water into gaseous. Okay, water into liquid phase मतलब water liquid और here water in gaseous phase, that water vapor. तो liquid to vapor conversion. So अभी किसी भी liquid को अगर vapor में convert करना है we need to supply heat for that, है ना। हम घर में पानी बॉईल करते हैं तो पानी को हीटिंग करेंगे तो पानी gaseous phase में चला जाता है, this is what. लेकिन
This process is called the vaporization. यहाँ पे होगा आगे जगह delta by H, enthalpy of vaporization, and this is 40 kilojoule at 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius heat करेंगे 40 kilojoule है, और ये 44 kilojoule at 25 degrees Celsius. ठीक है, हम वाटर को कौन से टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, that also matters. अगर हम वाटर को 100 डिग्री को हीट कर रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज 40 किलो. ओके, और उसे अगर हम लोग 25 डिग्री को हीट कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर हीट कर रहे हैं, तो दैट इज यू कैन से 44 किलो जूल is the enthalpy of vaporization. So what is enthalpy of vaporization? Enthalpy of vaporization is the process. Enthalpy of vaporization is the process V in which 1 mole of liquid is converted into gaseous without changing temperature. The gaseous state without changing temperature is called enthalpy of vaporization. So this is enthalpy of fusion, enthalpy of freezing. This is enthalpy of vaporization. So what is enthalpy of vaporization? That is liquid to gaseous phase. So whenever any substance is moved from liquid to gaseous phase, that is called the enthalpy of vaporization. So water का example दिया मैंने, 1 mole of water is converted from liquid to gaseous state without changing temperature, and this phenomena is called the enthalpy of vaporization. How much is the heat required? 40 kilojoule at 100 degrees Celsius or 44 kilojoule at 25 degrees Celsius. At what temperature we heat it, that matters. उसके आधार पर वो चेंज करेगा. ये enthalpy of vaporization. और enthalpy of vaporization की उल्टा प्रोसेस भी हो सकता है. हम gaseous state को liquid में लेके आते हैं, and that process is called condensation. That is called condensation. You can say this is H2O, which is in gaseous phase, bring H2O, which is in liquid phase. So water gaseous to liquid. So liquid to मतलब gas to liquid is a condensation process. So this will be enthalpy of condensation, and that will be opposite to 40 kilojoule like this. और ये माइनस में होगा because this heat has to be released. उतना रिलीज करेंगे तो भी होगा, और इतना ये एब्जॉर्ब होगा, प्लस और माइनस दोनों फर्क है यहाँ पे. So this is what we have. So once we understood what is enthalpy of vaporization, we understood what is enthalpy of condensation. Once we understood enthalpy of fusion, we understood enthalpy of freezing, because they are just opposite of each other. Nothing more. Clear with this? So there are different enthalpies which are involved in this physical change. The physical change is solid to liquid, liquid to gaseous. We have gaseous to liquid, liquid to solid. So these are the enthalpy of physical changes. Because of without enthalpy change, this change is simply impossible. So in that sense, you can say enthalpy is involved. Heat of reaction is involved in most of the every physical change. So if we have to move from solid to liquid or liquid to gaseous, vice versa, gaseous to liquid and liquid to solid phase, then there has to be a change in enthalpy, and that is noted here. That is being studied here in this topic. Change in enthalpy of different physical processes. That is enthalpy of fusion, that is solid to liquid, enthalpy of freezing, that is liquid to solid, enthalpy of vaporization, that is liquid to gaseous, and enthalpy of freezing, that is gaseous to liquid. और अब इसे हम सीधा भी देख सकते हैं कि enthalpy का graphical representation देखते हैं. वाटर का ये दिखता है कि suppose this is water H2O in solid phase. H2O in solid. H2O solid का हम चलते हैं H2O in liquid phase. Okay. और यहाँ पे चलते हैं this is H2O in gaseous phase. तो आइस को हम हीट करते हैं, आइस को हीट करते हैं, तो हम H2O solid यहाँ से चलते हैं. This is called enthalpy of fusion. Enthalpy of fusion, solid to liquid. Liquid को लेके चलते हैं gaseous में. This is called enthalpy of vaporization. Vaporization. Okay. और हम सीधा गैस टू लिक्विड में चलते हैं. ये टोटल क्या होगा हमारा? This is enthalpy of sublimation. है ना? This is enthalpy of sublimation. Solid से सीधा gaseous जा रहा है. तो enthalpy of vaporization क्या हो सकता है? Enthalpy of sublimation क्या हो सकता है? Enthalpy of sublimation is equal to enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization. ये होता है. ये टाइम कि किसी भी सब्सटेंस का अगर हम enthalpy of sublimation फाइंड करते हैं, तो sublime मतलब प्रोसेस क्या होता है? Solid to gaseous होता है. तो solid to पहले liquid चलते हैं, और liquid से वापस gaseous हम लोग चलते हैं. So in that sense, solid to liquid is a fusion, and liquid to gaseous is a vaporization. दोनों का संबंध is enthalpy of sublimation. So enthalpy of sublimation for any of the substances is equal to enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization. This is what we can say. So one important problem. So this is the change in enthalpy in different processes. Still, we have to discuss more different types of change in enthalpy. That is, change in enthalpy in atomic changes, change in enthalpy in molecular changes, then change in enthalpy in solution formation, or many that has to come.
सो आज के लिए सफिशिएंट है और आप थोड़ा कल प्रिपेयर करके आइए, प्रिपेयर कीजिए ताकि हम कल के लेक्चर में और इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।